All right, so what we will do now is an integration. I'm going to open this whiteboard. So basically what we have done is we have learned standard formulas Hmm. and a method of integration, Yes, sir. substitution, okay? So within substitution, there are some important substitutions that you must know by default. Okay, for Okay. example, if so this is the topic which is the topic of substitution with some more focus. अभी भी substitution ही हो रही थी but ढूंढना पड़ता था, right? हाँ. Now what are the standard tricks? For example, if you're given a square plus x square in any integration question, Okay. what you have to do is put x is equal to a tan theta. If in any integration question you see this expression, okay, you have to do an integration of this. Especially in denominators or under root. We will see the examples. Because इससे क्या होता है? It becomes a square plus a square tan square theta. You can also put a cot theta. So this becomes a square secant square theta. This is one. ठीक है. The second you can use is a square minus x square, where x is equal to a cos theta or a sin theta. So this becomes a square minus a square cos square theta or a square minus a square sin square theta. ठीक है? Then you can also have x square minus a square. Again the same thing. You can put secant or cosecant. X is equal to... This is more inspired by your knowledge of trigonometry. If you know trigonometry, you know why you are doing this. So this will become a square secant square theta minus a square is equal to a square tan square theta. तो जो भी इंटीग्रेशन में ऐसे आ रहे हो algebraic expression, उनको with the help of trigonometry you can simplify them. So for example, I put a square cosecant square theta minus a square, okay, is equal to a square cot square theta. Okay. Similarly, you can have many. You can have a situation like a minus x upon a plus x. Okay. Or you can have under root of a plus x upon a minus x. Right. So what do you do? X is equal to a cos squared theta. Okay. So you will see certain integrals can only be done with these highly specialized type of substitutions. Otherwise, you can't even start them. Okay, so b minus x, or for example, under root of x minus a into x minus b. मान लो x minus 1 into x minus 2 है. In that case, x is equal to a cos squared theta plus b sin squared theta. You can have one more where you can have under root of x upon x minus a. If you are good in trigonometry, these are straightforward for you. इसमें कुछ नहीं है करने को. So x is equal to a secant square theta. क्योंकि ये सब सॉल्व करने पे बहुत सिंपल हो जाता है. अंडर रूट हट जाते हैं और एक टर्म आ जाती है. ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये बन गया. Easy to solve हो जाता है क्वेश्चन बहुत. Okay, you will see now the power of these special types of substitutions. तो ये आपको जो है प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि कौन से वाला ये क्वेश्चन है और कौन सा. बट ट्रिग्नोमेट्री की अगर नॉलेज है तो बाय डिफॉल्ट यू कैन डू दिस. यू रियली डोंट नीड टू मेमोराइज एनी ऑफ देम. लेट मी शो यू एन एग्जांपल. Now, as an example, for example, you have to do an integration of x cube upon under root of 1 plus x square. Okay. Okay, you have to integrate this. Now, I know this is basically 1 plus tan square theta. Yes, sir. Right? तो मैं लिख देता हूँ x is equal to a, क्योंकि 1 ही है तो मैं इसको 1 ही लिख देता हूँ. x is equal to tan theta
So dx is equal to secant squared theta d theta. So this becomes tan cube theta divided by under root of 1 plus tan squared theta secant squared theta d theta is equal to tan cube theta secant squared theta divided by secant theta d theta. कट गया secant theta. So you're left with tan cube theta and secant theta d theta. If I solve this, this becomes sine cube theta upon cos 4 theta d theta. Right now, this do you see this form sine and cos coming together? Yes, sir. Right, this is quite close. Matlab, you can also solve it algebraically, but I have done it in a different manner. You can put cos theta is equal to sine theta. Sorry, t. Okay, minus sine theta is equal to dt. So this becomes एक इसमें adjust हो जाएगा sin theta d theta. So this will become dt into sin squared theta, मतलब 1 minus t square divided by t raised to power 4. So minus dt by t4 plus dt by t square. Algebra में convert हो गया. हाँ. This is straightforward, right? This is t raised to power minus t plus 1. Sorry, this is 4, right? So this is 4. This is 4. ठीक है? Yes, sir. You know, the other way around could be this. इसमें क्योंकि देखो you had to do from x to theta, and then again theta had to be converted into t. तो 2 बार करना पड़ गया, right? But if you notice, इसमें जो derivative है x square का वो दिया हुआ है. If you notice, the derivative is hidden here. The derivative of x square is x. तो ये exactly trigonometric form है नहीं. You know, if you just notice it, it is x into x square upon under root of 1 plus x square. So I know the derivative of x square is x. So put x square, say 1 plus x square is equal to t. Okay, let me write it neatly. Put 1 plus x square is equal to t. So 2x dx is equal to dt. So x dx is equal to dt by 2. Right? So ये जो x और dx है, ये हो गया dt by 2 और x square हो गया t minus 1. ये हो गया अंडर रूट ऑफ टी. एक ही स्टेप में आ गया भाई, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स दिख गया था मुझे, तो मैं सब आराम से कर लिया. वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला थोड़ा लंबा लॉन्ग ड्रॉन हो गया है ना, तो ये रिलेटिवली इजी था काफी करना है ना. सो लेट्स से यू डू सम प्रैक्टिस ऑन स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस. दिख जाएगा आपको वैसे. लेट मी जस्ट सी इफ आई वी कैन प्रैक्टिस सम ट्रिग्नोमेट्रिक. You can see, right, the course runs. Course runs. You have to be on your toes to match the speed. So we will, okay, so let's say we have to integrate yeah. So
यस, आ गया. So let's say I give you a question which is very elementary. Okay, so you now this is special substitutions which we saw above, जिसमें x की वैल्यू a tan theta a cos theta ये स्पेशल देखे थे अभी हमने, हम्म right? So we're going to use these special, all these. Okay, let's see. You have to integrate dx divided by under root of a square minus x square. Now, if you notice, there is no specific rule except that ये मालूम है कि अगर x इज इक्वल टू मैं a साइन थीटा डाल दूं तो मेरा नीचे का जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, a cos थीटा बन जाएगा. ओके, सो dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a square minus a square sin square theta is equal to a cos theta d theta. a cos theta कट गया, integral of d theta is equal to theta plus c, and what is theta is equal to sin theta is equal to x by a, theta is equal to sin inverse x by a. और ये हिंट कहाँ से आ रहा था, क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है मिलती जुलती ये वाली, हम्म इससे मुझे पता चल गया. One of the forms, if you अच्छा. notice, is this x square minus a square and a square minus x square. तो यहाँ पे मुझे a square minus x square दिखा, हम्म right? So the moment you see these forms, they are a great hint for you to take action. Let's say you have to integrate, and now you will see कि और कोई मतलब you can't do anything. You're हाँ. stuck with these. Okay, so try any other method, होने नहीं वाला वो. बहुत मतलब integral of dx upon अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब मुझे मालूम है ये ऊपर जाऊं अगर मैं फॉर्मूले की लिस्ट में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये है ए टैन थीटा ए कॉट थीटा, क्योंकि ये बन जाता है सीकेंट या कोसीकेंट डिपेंडिंग ऑन आप टैन डालते हो या कॉट डालते हो, है ना. यस सर. तो मैं इसमें डाल रहा हूं, देखो एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए secant squared theta, substituting. So this is a secant squared theta d theta. है? सॉरी, x को तो मैंने a tan theta डाल दिया ना. हाँ. So this is a square, ये x डाल दिया मैंने. So this is a secant squared theta d theta upon a secant theta. So secant theta d theta. What is the integral of secant theta? That you have to memorize. secant theta का इंटीग्रल तो याद होना चाहिए ना, तो यस सर. आंसर इज इन वन स्टेप, अदरवाइज देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. लॉग से आता था, हम्म लॉग ऑफ सीकेंट थीटा है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड यार. ओके सर. व्हाट्सअप. Many pages are there?
All right. So this was log of secant theta plus tan theta. सर आपका माइक चेंज हो गया सर. Yes. I was taking a better. हेलो. आगे आवाज आ गई? हाँ अब ठीक है. ठीक है. सो नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज बैक. x हाँ की ये secant थीटा का इंटीग्रल ये. हाँ So log of, so we know tan theta from here will be x by a. So secant squared theta is equal to 1 plus tan squared theta is equal to 1 plus x square by a square. So under root of 1 plus x square by a square plus x by a. Answer. But ये जो है x square plus a square, this gave me a very good hint how to solve it. tan लगा लेते हैं, सब्ट्रैक्शन आती है तो साइन और कॉस लगा लेते हैं. हाँ. राइट, डिपेंड करता है. अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये लगाएंगे.
अगर हाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, लेट मी सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज एनी। कैन यू रिकॉग्नाइज? I'm using page 2. Okay. So let's say you have to integrate 1 divided by under root of 25 minus 16x square. Form कौन सी लग रही है? Which form do you see? If I take you back to the previous page, 25 minus 16 x square denominator में, right? So something like this. हाँ इससे मिलती जुलती है। हम्म A square minus, let me go back to the page. Okay, so I'm saying rewrite this as 1 upon under root of 5 square minus 4x का whole square. ठीक है? हाँ So basically you're doing this a square minus x square. The most comfortable is x equal to a cos theta या a sin theta, यस सर। है ना? बट क्योंकि मैंने ये जो x के साथ 4 लिखा हुआ है ना, दिस इज अ पेन फॉर मी, हम्म right? So what the one way to solve is I can take 16 common and I can say this will become 4 under root of 5 by 4 whole square minus x square. 16 बाहर ले लिया ना, ठीक है। so this becomes a square. Now I know a, so let me put x equal to 5 by 4 sin theta. यही डालना होता है ना, x is equal to a हाँ sin theta. मैंने वो a मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसमें, क्योंकि मेरी जो फॉर्म है उसमें x के साथ तो कुछ लिखा ही नहीं होता। यहाँ 16 हाँ था, तो आई टुक 16 आउट, मैंने आई चेंज्ड इट टू प्रॉपर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट? सो लेट्स पुट इट बैक। सो ये आ जाएगा dx is equal to a cos theta d यस सर। theta. So therefore this will reduce to dx की जगह I'm going to write a cos theta d theta upon 4 under root of 5 by 4 will remain as is, and this will become 5 by 4 sin theta a square minus x square. x की जगह मैंने ये डाल दिया, so this is integration a cos theta d theta divided by 4 under root of, so I'm taking 5 by 4 दोनों में से कॉमन, ठीक है। अंदर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. So this becomes 1 by 5 a cos theta d theta upon a, तो there is no a, there is only 5 by 4. यहाँ पे तो हमने ये डाला था ना. यस So सर। dx was, if I take integration of derivative of this, this will be dx is equal to 5 by 4 cos theta d theta. So this is 5 by 4 actually in the numerator. So I will write it as 5 by 4. And ठीक है। this is anyway cos theta. हम्म Purpose यही था नीचे cos theta आ जाए, यस सर। है ना? So ये कट गया. So 1 by 4 d theta. Okay. So this is 1 by 4 theta. So theta you can find from here that sine theta is equal to 4x by 5,
and theta is equal to sine inverse 4x by 5. So this will become Okay. 1 by 4 sine inverse. Actually ये जो integration है ये है भी वही. If you notice, the derivative of sine inverse x is 1 upon under root of 1 minus x square. ये वही फॉर्मेट है, इसलिए इसका आंसर साइन इनवर्स आया है. ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ साइन 4x, यहाँ पे 4 था x के साथ, तो वो 4 हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे आंसर में आ रहा है नीचे. इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है ना, तो ये डेरिवेटिव पता था हमें, डेरिवेटिव तो इसका इंटीग्रल ही कर रहे हैं हम. दिस इज फॉर्म ऑफ a square minus x square. Yes, sir. So if you do a derivative of, sorry, if I do a derivative of sine inverse 2x, it will be 1 upon under root of 1 minus 2x whole square, and then a derivative of 2x, which will be 2. Yes, sir. So this will be 2 upon under root of 1 minus 4x square. तो वही हो रहा है, ये फॉर्म जो आती है ये वाली जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, 25 minus 16x square. Somehow this is, the integral has to be sin x. Sine inverse x, sorry. तो वो आ रहा है. ठीक है, so you try this now, okay? Let's see if you can recognize the form. Form recognize हो गई वही स्टैंडर्ड वाली, cos थीटा डालना है, sec डालना है, cosecant डालना है. You can solve it in a step. Okay, let's say you are trying okay, let's थोड़ा सा okay, let's start with something easy. So let's say it is e raised to power x upon e raised to power 2x plus 9. Try this. So now it's exponential. Don't do this with exponential. Okay, you can use any trick you want to. ठीक है. Now you know कि standard substitutions जो हमने सीखी हैं अभी थोड़ी सी, ये वाली, we have to get this to that point. हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें नजर आ जाए. और ई का तो हमें वैसे भी डेरिवेटिव भी मालूम है, वो दिया ही हुआ है ऊपर. Yes, sir. और कोई चॉइस भी नहीं है वो डालने के अलावा. मे बी आफ्टर डूइंग दैट दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड इंटीग्रल, a standard substitution integral. नीचे 9 है, e2x 9. Okay.
Any thoughts? We have done exponential. Standard. इसी का डेरिवेटिव अवेलेबल है ऊपर. सो ये क्या बन गया? ठीक है. ये बन गया ना Okay. ए स्क्वायर हाँ. प्लस एक्स स्क्वायर. कौन सी? Yes. व्हाट शुड यू डू नाउ? दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. एक्चुअली अभी आपको सब्स्टिट्यूशन लग रहे हैं, बाद में फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सारे. इनका डायरेक्ट जैसे ऊपर साइन इनवर्स एक्स आया था, वैसे इसका भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी फॉर्मूला है, tan इनवर्स. Which substitution you think will fit in? Because you're learning, I'm calling them substitution. Otherwise, these are to be memorized. देख लो फॉर्मूले में जाके. इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? हाँ. Yes. sir. फर्स्ट वन प्लस हो रहा है, एक दिया तो ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा यार, और तो कुछ है ही नहीं. यू कैन ऑलवेज यूज tan थीटा. Yes, sir. t is equal to थ्री tan थीटा. Yes, sir. This is tan inverse. So this is a standard formula, by the way. ठीक है. What is the derivative of tan inverse x? The only difference is यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है. तो ये भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट दिस Yes, sir. tan इनवर्स. तो आपको डेरिवेटिव भी याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, तब जाके आप इंटीग्रल कैलकुलस करते हो. फिर उनको यूज करके ऑल दी सब्स्टिट्यूशंस आर हैपनिंग. यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है सारी. ठीक है. Okay, let's say we have to do one more. Okay. So this is integral of cos theta d theta under root of 4 sine square theta plus 1. Now the derivative is given. Sine theta ka derivative is given above. That is substitution all about, right? That you can see the derivative of something in the integral itself. So you can see the derivative of sine theta is cos theta. You put sine theta is equal to t. लिखो.
सही जा रहे हो, ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है. So again, you're back to that the t square plus a square format. Hmm. This is one square, right? Yes, sir. So take 4 out क्योंकि हम x square plus a square लिखना चाहते हैं ना, तो this will confuse. तो 4 बाहर ले लो और इसको 1/4 कर दो, 1 को. So 1/2 आ जाएगा बाहर. You understand, right? Yes. ठीक है, ठीक है. So integral dt. So you're writing which one? देखो ये, so this is dt you mean, right? dt. cos theta हटा दिया ना, so this is ठीक है. dt, ठीक है, dt. Okay, so now it is under root 4 बाहर लिख लिया, तो this is t square Yes, sir. and this is 1/2 whole square. Hmm. So which format looks good? a square plus x square. Yes, sir. ये भी स्टैंडर्ड ही है, इसका डायरेक्ट आंसर पता होता है सबको, बट क्योंकि आप सीख रहे हो तो सिर्फ अभी आप लर्निंग, नहीं तो फाइनली जितने भी मैंने पेज नंबर 1 पे स्पेशल लिखे थे, दे आर लाइक इंटीग्रेशन आइडेंटिटीज जिनका आंसर हमें पहले से ही मालूम है. वी ऑलरेडी नो द आंसर. वी नो द आंसर टू सम ऑफ देम, नॉट ऑल बट सम ऑफ देम. स्पेशली जो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले हैं और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले, उनका आंसर पता होता है. Okay. लेट्स गो बैक. ठीक है, अब कौन सा फॉर्मेट सही लग रहा है आपको? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या सही रहेगा डालना? t को क्या डालें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए? विच वन डू वी यूज? 8 tan theta by 8 cot करेक्ट theta. है. So put t is equal to a tan theta, right? Your a is half now. Hmm. T is equal to a, which is half tan. Don't use theta because theta पहले आ चुका है ना क्वेश्चन में. Use alpha. Yes. So half, a की जगह half लिख लो. Correct. Now put it back. Find dt first. dt is equal to how much? क्योंकि dt हटाना है ऊपर से पहले, ये वाला. ठीक है, डाल दो, वैल्यू डाल दो ना. पुट t की जगह दिस. dt is equal to how much? What is the derivative of tan alpha? Secant square alpha. Sec square alpha. You need to practice. You can clearly see that trigonometry and derivative both need practice from your side. Hmm.
You have not practiced. Yes, sir. Proficiency एकदम हाथ में है नहीं अभी. There is only one way practice. कोई तरीका नहीं है. इधर भी तो डालो t की वैल्यू फिर. Put the value of t also here, right? Put the value of t as half tan alpha square. ठीक है. So this is multiplication by the way. दो बार क्यों आया ये? No, no, this is not a plus b whole square. अच्छा मैंने गलत. ये नहीं आएगा इसमें. Just write 1/4 and then take 1/4 and there is a square root also. Square root है? है. नहीं. एक मिनट. नीचे क्वेश्चन में है ना स्क्वायर रूट. ये रहा स्क्वायर रूट है ना. वो होल स्क्वायर रूट है. हाँ ठीक है. सो 1/4 बाहर ले लो. सो अंदर आ जाएगा 1 + tan alpha. All what you're doing is most of them are standard rules which have to be memorized for integration. Hmm. We are doing derivation type of, but at the end of the day, all of this will become rules. Yes, sir. The moment you see 1 upon under root of a square plus x square, answer is this. This is secant alpha. Again, knowledge of trigonometry.
ये क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा सीकेंट अल्फा. डिनोमिनेटर में सिर्फ सीकेंट अल्फा रह जाएगा. इन द Yes, sir. डिनोमिनेटर, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ secant square alpha is equal to secant alpha. What have you written? What is 1 plus tan square alpha? Secant square alpha यार. ये वो तो कट गया ना ऊपर से, ऊपर कट गया तो फिर secant alpha रह गया. tan कैसे आ गया? वो फिर इंटीग्रेशन कर दिया. उसका इंटीग्रल तो ये होता ही नहीं secant का. वो तो अभी करा है मैंने. log of secant alpha plus tan alpha होता है. The integral of secant alpha is not this. Okay. So you have to memorize derivative. करके देख लो secant alpha tan alpha का derivative क्या आता है. You yourself will see ये नहीं आता ये. Okay. Secant alpha का integral is a standard integral which we did in the first class itself. Standard integral अगर याद नहीं है तो ये करने का फायदा नहीं है. You have to memorize the standard integrals. देखते you should be able to answer. Okay, let's say you have to do this. Integration. So I'm going to the next page now. Okay, let me go to the next page. So this is integral of, okay, let's say you have to do x plus 3 divided by 9 minus x square. हाँ जी. So this is of the form a square minus x square नीचे, right? Hmm. But the difference is this.
अगर आप देखो, आई कैन स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स। तो ये तो सीधा सीधा साइन इनवर्स वाली फॉर्म है, 3 वाली जो आ रही है राइट साइड, ये सेकंड टर्म, राइट। फर्स्ट टर्म को देखो, आई नो द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स डी एक्स। सो फर्स्ट टर्म के लिए मैं करता हूं पुट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू माइनस dt बाय 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी। हम्म स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। और इसमें दिस इज ऑफ द फॉर्म साइन इनवर्स, इफ यू रिमेंबर हाँ मैंने बताया था 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, बाद में ये रूल बन जाएगा, एनी टाइम यू सी इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यू हैव टू मेमोराइज द आंसर एज साइन इनवर्स। ठीक है। ऐसे याद रखने हैं आपको सारे आंसर, अभी एग्जैक्ट फॉर्मूलेज लिख लेंगे हम। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए मैं यूज कर रहा हूं so this will be 3 cos theta d theta sorry, this is not 9 square, this is 3 square. हम्म So, मैं इंटीग्रेट कर ही रहा हूं इसको सीधा, ठीक है। वाई डू ठीक आई, है। टी रेस टू पावर n है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। Okay, so this will become थीटा इज अगेन साइन इनवर्स x बाय 3। टी तो आ गया वापस यही, एंड थीटा यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स x बाय 3। देखो मैंने ऊपर पहले लिख दिया था, द हाँ आंसर टू दिस विल बी साइन इनवर्स x बाय a। तो साइन इनवर्स x बाय a आ भी गया, राइट। यस सर। So most of this is dependent on how much you practice. If you don't memorize and practice, you will not be able to solve them. If you do, it's a very simple case. There is no complication in this. Okay, let's try one more. Okay, so let's say so today we focused, if you notice, on the page number 1. These इस पे focus कर रहे थे आज हम, हाँ right? इन पे a square plus x ऐसे ऐसे। Okay, so let's say we are solving integrate. No, let me go to page number 3 first. Okay, let's integrate the integral of 1 upon x. This is log x whole square plus 2 square. Integrate. Try this.
ठीक है, dx also, right? dx, लिख रहा था। ठीक है। सो ये वाला पार्ट तो गया, सो दिस इज dt, यस सर। ठीक है। हमने करे हैं ऐसे क्वेश्चन बाय द वे, log x देख के उसका डेरिवेटिव दिखा हमें। So now be careful. You already put log x as t, right? So put t square only here. ये t है. Log x तो आपने खत्म कर दिया ना? So just put, so ये कौन सी फॉर्म है? a square plus, x। इसका आंसर तो होता है tan inverse x by a, अगर आपको याद रखना है. अच्छा। So straight away you can write this as tan inverse x by 2. आपके केस में t है तो put t. और t क्या ठीक ले है। रखा था? ओके। Answer. The other way was obviously put t is equal to a tan theta, मतलब 2 हाँ, tan theta, फिर डेरिवेटिव लो. तो ये आइडेंटिटीज ही हैं एक तरह से. समझ गया। साइन इनवर्स की, इसकी, उसकी, ये सब आइडेंटिटीज में गिनते हैं इसको हम. ठीक है। But there is no limit to how much you can practice in this. हाँ, There is no limit. You can just continue to practice as much as you want to. Okay, let's do one more. Okay, so 1 upon under root of x divided by under root of x minus under root of a. Okay, just small correction so that you can see it. This is under root of a square. यही आ गया basically. यस सर। Oh sorry, I'll just correct this यार. I think ये, कोई फॉर्म नहीं बन रही इसके अंदर। हाँ, ये अंडर रूट जो है वो दोनों पे है. So this is under root of
x minus a square. देखो जनरली व्हाट वी आर अकस्टम टू इज दिस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें इसकी आदत है, राइट? Yes, sir. तो इसमें हम x इक्वल टू सीकेंट थीटा डाल सकते हैं, x इज इक्वल टू कोसिकेंट डाल सकते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा a सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर विच इज a tan थीटा, या इसमें कोसिकेंट डालोगे तो बन जाएगा a cot थीटा। बट यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है ना, तो देखो हाँ. इफ आई रीराइट दिस, क्योंकि मुझे इससे हिंट मिल गया है कि मैं इसको, कैन आई पुट इट एज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. So Okay. this is let under root x be equal to t. So 1 by 2 under root x dx is equal to dt. Hmm. So dx upon under root x is equal to 2 dt. So ये तो चला गया, right? This is like adjusted Yes, sir. 2 dt. t square minus a square. Because under root x is t, so this becomes t square. Yes, sir. Now this form is recognizable, right? ये हमने फॉर्म पढ़ी हुई है, x square minus x square की, हाँ पढ़िए. है ना? So this form is, you can recognize this form. इसमें you can do substitution, but this is also, by the way, just for your knowledge, is a standard integral. Standard integral है, but क्योंकि अभी हम substitution का मेथड पे ज़्यादा फोकस है हमारा, so we are not writing the answers. हम उस जो हमने चार्ट बनाया शुरू में, उसमें मैंने राइट साइड पे किसी का भी आंसर नहीं लिखा, मैं तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहा हूँ, बट फाइनली उनके आंसर हैं, मोस्ट ऑफ देम, सबके नहीं है बट हैं, कईयों के हैं. सो अब क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू a secant theta. So this is dt is equal to a secant theta tan theta d theta. 2a secant theta tan theta d theta, okay, divided by under root of a square secant square theta minus a square. So this is 2a secant theta tan theta d theta, a tan theta. So this is 2 secant theta d theta, which is log of secant theta plus tan theta. And it. So this is 2 log of we already know what is secant theta equal to t by a, and t is under root x. So ये हो गया log of under root x by a, right? And secant theta आप निकाल, tan theta निकाल लो अगर secant theta मालूम है. So tan theta is equal to secant square theta minus 1 is equal to t square by a square minus 1. t is equal to x upon a square minus 1. तो tan theta भी निकल गया. So under root of x upon a square minus 1. Answer. Okay. Right. So today what we learnt was some special substitutions, but these are not substitutions actually. Most of them are direct answers also. But if you know substitution, you can recognize the formats. It's very easy. ठीक है. अभी हमने कुछ ही करे हैं. Our key focus was first three. These. Okay, understood. तीन और भी है ना? हाँ. A minus x और B वाले. So we will solve these also, but first we have learnt these three. So today evening what we will do, we will focus on the balance. Okay. ठीक है? So we are, मेरी side से we are progressing. हाँ. Your side the progress is yet to be seen. Hmm. थोड़े टाइम में you will see in 2-3 classes integration is complete. Okay. And we are moving to some other topic, maybe application of integrals. So this has to be practiced side by side. If I am doing 20-30 questions in a class,
यू कैन टेक टाइम आउट टू डू सम यार अपने आप ही. हाँ ठीक है. ठीक है.